Welcome to GATE 2026 solutions. One by one, all the subjects will be discussed by the concerned teachers. और मेड जी की जो खास बात यह है कि नियरेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस विल बी टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज. हमारे टीचर्स हमेशा सिंसियरनेस के साथ एक डेडिकेटेड स्पिरिट के साथ काम करते हैं. एंड द स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू अपीयर इन गेट 2027 or 2028 maybe some freshers. For them, we are organizing the National Scholarship Test, that is NST2. NST1 was conducted in the month of November and NST2 will be conducted in the month of February. Last date to apply for the National Scholarship Test is 20th of February and exam will be conducted online on 22nd of February. So those who are planning to write the GATE 2027 or ESE 2027, they can appear in the NST. नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट लाइव ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन ही इसका एग्जाम होगा. इट विल बी वैलिड फॉर क्लासरूम कोर्सेज एज वेल एज फॉर द ऑनलाइन कोर्सेज. अप टू 100% देयर इज प्रोविजन ऑफ स्कॉलरशिप एंड दिस विल बी ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी. डियर स्टूडेंट्स, दोज हु आर पार्ट ऑफ द मेड जी, जिन्होंने यहाँ पर क्लासेस की हैं and they have completed their syllabus, we expect you have done well, but in case any area still remains incompleted, if it is any area uncompleted, that you are invited to come and attend the classes. You can come back and in any of the MADE centers you can attend the missed classes, not an issue. अगर आपको कोई और सहयोग चाहिए, please do come and submit your request in the comment box also. We will try to help you out. And after the GATE examination will be over, after the result will be announced, we will come forward for the post GATE counseling, which will be for the admissions in the MTech and the PhD courses. So how best you can opt the colleges at your score, which colleges will be available, उसमें क्या प्रिपरेशन करके जाना है, विच एरियाज यू हैव टू प्रिपेयर, ऑल दिस इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड आफ्टर द गेट रिजल्ट. एंड गेट 2026 के रिजल्ट के बाद इफ देयर इज ए नीड ऑफ एनी गाइडेंस सेशन और द क्लासेस फॉर द इंटरव्यू पर्पज, वी विल प्रोवाइड यू. So thank you very much. And now one by one all the teachers of the computer science will discuss the question paper of the GATE 2026. Since these are memory based questions, so we request from all of you to keep on submitting the questions also to your concerned teachers or in the telegram group, और उन questions को हम लोग solve करके and we will keep on giving the solutions. After the this complete discussion will be over in a day or two, the solved solutions PDF also will be made available. Thank you very much. Hi everyone. So how is the exam? Can you please post your how you done the exam today? Hope you all done great. So this is the one of the question from DBMS to find number of super keys of the given relation attributes ABCD. AB one candidate key and AC is other candidate key. Then how many super keys in the relation? So please post your answer.
So super keys because of candidate key AB. Super keys because of candidate key AB is 2 square. Okay, any subset of CD combined with AB. Super keys because of candidate key AC is also 2 square. Okay, so super keys over ABC common attributes is 2 power 1. So total number of super keys. Okay, so 4 plus 4 and common super keys if we subtract, then total 6 super keys is the answer. Yes, right, 6 super keys. AB BC. Okay, AB BC or AB AC answer going to be same only. Even AB and BC is candidate keys, AB and AC is candidate keys, answer going to be same only. So right, one more question from the DBMS. It's Armstrong rules and basic properties of the functional dependencies. Please post your answers for this. How was the level for maths and FT? Please post your questions. The questions which I received, some are easy and some are moderate and some are conceptually, means a little deep knowledge also. Okay, so it's a whichever questions we received, those may be average questions. So still, once we get the complete paper, we'll able to say more clearly what the difficulty level of the paper. But most of the students are saying it is lengthy paper. Let's see the full questions. So yeah, what is answer to this question? Relation ABCD and functional dependencies of the relation. Functional dependence in the form of x determines y. Which of the following is correct? So if PQ determines R, then P determines R, RQ determines R, may or may not. P determines R, RQ determines R, may or may not. So first option is wrong. If P determines R and Q determines S and PQ combinedly determines RS. Okay, so B correct. If P determines R, okay, PQ closure also determines the R. So B and C is correct options. If PQ determines R, then P determines R. Okay, so then Q determines R may not be true, because if we take this FD set, if you compute the Q closure of this FD set is only Q not determines the R. So this D is also wrong. As for the sequence of these options, answer is BC. So the options may be different in your paper. Okay, right. Now this question I received data little less, but just I am guessing that which of the following may not dependency preserving decomposition, may not possible to decompose dependency preserving decomposition. So BCNF may not, okay, so possible to decompose with dependency preserving decomposition. So most probably it should be the BCNF, and this kind of vertex exploration finishing time and vertex exploration ending. Okay, so this kind of question we done many in the test series also, so many, and in GTQ also given the similar model question. So but options are not received correctly, but so this similar model questions we done in the GTQ series and many times in the test series. So I don't think so this is going to be the difficult. So please post your comment. What can be the means say what are options of this question? So options of this question and correct answer. Right? Gauranshi, BCNF. So then one more question from the
recurrence equations. Okay, T1 is 4 Tn by 2 plus n power log 5 base 4. So log 5 base 4. So if directly can apply master theorem. So f of n is n to the power of log 5 base 4 and just slightly more than 1, and n power log a base b, n power log a base b is n square. So n square polynomially bigger, so T of n T of n recursion asymptotically equal to theta of n square. So is this the same question or any change in the question? Just post your comments. So as for the as I receive the data, so this is the recurrence equation. So is it same? Recurrence equation? Right. So this question is related to domain relational calculus. This is related to the domain relational calculus. So see, there exists V and there exists W such that VU UV belongs to R and VW belongs to S. See, this relation R, tuple variable for this attribute P is U, and tuple variable for this attribute Q is V, and tuple variable for this attribute X is also V, and tuple variable for attribute Y is W. So the same tuple variable in domain relational calculus, the same tuple variable used for this Q attribute of relation R and X attribute of relation S, it means that it performs okay equijoin. It performs equijoin of those attributes, and it is, so U, attribute U in the result, attribute U means projected U. So that means the equivalent relational algebra expression is something like this: R equijoin with S such that R dot Q should be equal to S dot X, the free variable U, variable V, the same variable name in the domain relational calculus is equivalent is logically equal to the condition equality over the relation R and S cross product. So then after that, this U attribute values is in the projection. So projected the attribute U, it is a DRC syntax. So projected P. So R dot Q equal to R dot S dot X. Okay, R dot Q equal to S dot X, equijoin and projected P. So right. So next one more question from the binary heap. Consider a heap containing n elements where n greater than 100, n is odd. Okay, so assuming one based indexing means a binary heap which is cannot be the index of leaf node. Post your comment, what is answer to this question? So post your comment, which is cannot be the leaf node, index for the leaf node. So in a relation with binary heap of n elements, so A of 1 to n by 2 floor, A of 1 to n by 2 floor is or become internal nodes. Okay, these are internal nodes, and n by 2 floor plus 1 to n, these are the leaf nodes. Okay, so which is cannot be the leaf node index? Post your comment. So what answer you got? Is it same options? Which is the cannot be the index of the leaf node? Okay, so n is index of last leaf node. N is the
index of the last leaf node. Last leaf node is at the nth position. Okay, this is last leaf node index. If n is odd, n minus 1 by 2 is equal to n minus 1 by 2 equal to n by 2 floor. For odd number, n minus 1 by 2, is n by 2 floor. N by 2 floor means this is last internal node. Okay, this is the last internal node. Okay, so this last internal node, and this is not a leaf node. A is not a leaf node. Okay, so n plus 1 by 2, is bigger than n by 2 floor. N plus 1 by 2 is bigger than n plus 1 by 2 is greater than n by 2. It is also becomes leaf node. This is also become leaf node. So n minus 3 by 2, okay, is smaller than this one. This is also internal node. Okay, this is the last internal node, and in this value is smaller than this. Okay, so these two are the internal nodes and these two are the leaf node indexes. So which is cannot be the index of leaf node means A and B. A and B cannot be the index of leaf node. So far we received data of these 7 questions from algorithms and DBMS. So hope you done your exam good, and next followed by the one more subject. Stay tuned. Thank you. Everyone, I hope you have done the good very well in the exam. So we have some questions in TOS and CD. So let us start. Which of the following cannot be the number of states in the minimal DFA equivalent to NFA of 6 states? So if NFA has n states, then equivalent DFA will have maximum 2 to the power of n, maximum. Whether it is minimal or anything, we will see the later, but maximum will be 2 power n. As NFA is having 6 states, then 2 power 6, which is 64.
So the DFA cannot have more than 64 states. So according to the options, so this is C and D, both C and D are the right answers. Easy question. Okay. Next, if L1 and L2, if L1 intersection L2 and L2 both are regular, so in converse of properties I have given, if L1 and L2 are regular, then 100% L1 intersection L2 is regular. But if L1 intersection L2 is regular, if L1 intersection L2 is regular, then individually they need not be regular. They both can be regular, they both can be non-regular, or one is regular, the other one is not regular. Here L1 intersection L2 is regular and also L2 is regular, but what about L1? We cannot say anything. It may be regular, may not be regular, no guarantee. So according to the options, L1 complement is CFL. Maybe it can be a non-CFL also, so it cannot be the answer. L1 we cannot say, and L1 union L2 also we cannot say. Then coming to L2 is given regular. When L2 is regular and L2 complement is also regular, implies the regular language are closed under complement. So L2 complement is also regular. If a language is regular, then 100% it is also a CFL. So according to these options, so L2 complement is CFL. This is the right answer. So these are the memory based questions. The options may not be exactly correct. Okay, these are the two questions we have collected so far. So now we go to the next subject, CD, compiler design. This is good question. Okay, not so easy, and actually we can say a little bit easy only. So not tough. Which of the following is always true? Always true for LLF1 parser. Grammar must be left factored. Yes, if a grammar is not left factored, example, this is A alpha 1 and A alpha 2, this is non-left factored grammar. It is not LLF1, it must be left factored. Yes, it is true. Grammar must be left factored. Then LLF1 parser is more powerful than SLRF1. We cannot say anything. The comparison between LLF1 and CLRF1 is there, but there is no comparison between LLF1 and SLRF1. If a grammar is LLF1, it may or may not be SLRF1. If a grammar is SLRF1, it may or may not be LLF1. So it cannot be true. More powerful cannot be true. It is false. Then LLF1 is it is under non-backtracking technique. So it is also true. And it must be left recursive. No, if a grammar is left recursive, it is not LLF1. So here, which of the following is true? Answers are A and C. Easy question. Okay, guys. Next, consider the following grammar. Easy question, but it may take little bit time. Okay. So consider the following grammar: AS, BS, and BS and epsilon. S derives AS, BS, and BS and epsilon. Which of the following is true? Grammar is ambiguous. Grammar is ambiguous. Yes. Here we can say AS, BS, and I take here BS, and this is epsilon. This is epsilon. What is the string we have here? Here AS, BS, AS, BS, and S derives BS, and here epsilon ABB. Otherwise, what I do here, AS, BS, I'll take epsilon here because the production is given. Yes, there is epsilon, and here I take BS and epsilon. What is the string here? This is ABB. Here also ABB. The same string ABB is having two different parse trees. Therefore, the grammar is ambiguous. It is true. And AB is having only one parse tree. AB is having only one parse tree. Yes, here the productions are so first one is true, it is ambiguous. This is true, ambiguous. Next, AB. Yes, derives ASBS. How we get the AB? So here, if I substitute again ASBS, then the string will be AA.
it will have double A. And if I go for BS, it will be ABB. So I cannot get this. So what I do here, in this place I'll go for epsilon, and here ASBS, then epsilon. What is the string? AB. Okay, this is one parse tree. Let us try for one more. ASBS. In this place, if I go for BS, example, then AB, yes, we got it. Then if I go for again ASBS, the string is changing. We are getting one more B. So we cannot substitute ASBS here. And instead of this, if I go for ASBS here, then string will be changing AA. So here AB will have only one parse tree. We don't get the other parse tree. So anyway, so this is, so grammar is ambiguous true. AB is having only one parse tree, is true. And ABB, yes, initially I have given ABB. ABB is having only, it is having, it is ambiguous. ABB is ambiguous. I have given AS, BS. So what I do here? Here I substitute BS, then epsilon, ABB, this one parse tree. In other case, I substitute epsilon here, then BS, then epsilon, ABB. Yes, it is having two different parse trees. So any string, if it is having two different parse trees, then it is ambiguous. Yes, it is true. So it is MSQ. So here options are A, B, C. Okay, easy question, but it may take little bit time. Next question. Here, consider the following C statements. Character asterisk string 1 equal to this one, and here these statements are given. Statement 1, 2, 3 options are given. If you observe this one, any string must end with matched. It must be a matched string. Here double quotes has opened, but there is no double quotes here. So this comes under unmatched string, which is lexical error. Coming to the second statement, there is no lexical error, no syntax error, no semantic error. Here no error. And coming to the third statement, every statement must end with the semicolon. Actually, there is no lexical error, but here if you observe, semicolon is missing. So this is syntax error. So here the options are, according to these options, S1 is having lexical error and S3 is having syntax error. D is the right answer. Okay, this is also easy question. That's all, guys. Thank you. These are the questions we have collected, and more questions with the perfect PDF we will give you very soon. Thank you. Hello students, hi everyone. I hope you all done great in exam. Right, here we have student memory based questions from computer organization and architecture subject. So whatever the questions we received from the students, those questions which we already discussed in our regular notes. Okay, when I explain the questions you came. Okay, so we'll see one by one. First question is, which of the following of register operands on different instruction can cause data hazards in the pipeline processor? So we are just discussing the data hazards. You know that true data dependency, RAW hazard, anti-data dependency, WAR hazard, and output data dependency, WAW hazard. So only 3 types of data hazards present in the pipeline that we already discussed. You to know that
Okay, so here read after read is not a hazard because read before read is not a dependency. So in this question, this is the MSQ question, so right answer is A, B and D. Okay, so this is not the hazard. Read after read is not a hazard because read before read is not a dependency. Okay, this is the first question. Second question is match the following list 1 and list 2. So one side addressing modes given, another side operations given. Okay, so here we should match the contents. So immediate addressing mode is used to access the constants. Base register addressing mode used for the positional independent codes. Indirect addressing mode used for the pointer implementation. Index addressing mode used for the array element accessing. Okay, so according to the list 1 and list 2, we should identify the correct matching code. So here matching codes are given. Okay, A22 and B24, C21, D23. Okay, 2413. 2413, C is the right answer. Okay, students. Next question from the cache memory. Just read the question. Here what is given? Block size given 128 byte. Main memory size given 2 power 23 bytes. Cache memory 2 power 13 bytes. Here two different cache organizations mentioned. Direct mapped cache with a tag size of m bits and k-way set associative cache with a tag size of n bits, where k is equal to 2 power l. So l belongs to 1, 2, 3 and so on. So what is this? 2-way, okay, 4-way, 8-way, 16-way. Like this we have the cache. Okay, so here k-way, in place of k we are taking 2-way, 4-way and so on. So here k is equal to 2 power l. Now here 2-way 2 power 1, here 4-way 2 power 2, 8-way 2 power 3 and so on. So here l value belongs to 1, 2, 3 and so on, like this. Okay, which of the following relations between n and m are correct? So we should compare the tag space in the direct mapping and set associative mapping. When you see this, here it is very clear. Direct mapping format is tag, line offset, word offset. Then set associative mapping format is tag, set offset and word offset. So here these addresses word offset will be same, always the same, but here index, line offset and set offset, uski accordingly this tag will be varies. Here direct mapping m bit, then set associative mapping n bit. Okay, so this is the direct mapping address format, this is the set associative mapping address format. So as we know that number of sets depends on the k-way set associative mapping. Then when the sets are reduced, automatically tag space increased. So here tag space, here more tag bits, direct mapping, it contain the more cache index. Okay, here more cache index is there, that is the reason this tag space is less. Here less cache index is there, that is the reason tag space is more. So obviously here n is greater than m. Okay, direct mapping less tag space, set associative mapping more tag space. So n is greater than m. So this greater value depends on the associativity. So what is the associativity here? K-way associative, that means L value may be 1 or 2 or 3 and so on. So that here N value is equal to M plus L.
n value is equal to m plus l. Okay, so for the cross examination you should take any classical example, okay, sample example, and compare with the options. So here in the 4 options, correct answer is n equal to m plus l. That is the right answer. Okay, set associative cache memory tag space is greater than the direct memory tag space. So answer is n equal to m plus l. Okay students, right. Next question is, consider the following single precision format. So first of all, single precision format required: sine, biased exponent, and mantissa. 1 bit for sine, 8 bits for BE, 23 bits for mantissa. So bias of this format is equal to plus 127. This is the bias. Now here C value given, X value given. What is X? 35C 00000H. This is the hexadecimal. Iska value when you are taking, this become plus 1.1 into, okay, 2 to the power of minus 20, because already you know the formula, minus 1 to the power of S into 1.m into 2 to the power of BE minus bias. Okay, in this structure we should write the value. So this is X value. Similarly, if you consider Y is equal to 34A 00000 hexa. So iska Y value is plus 1.01, right, into 2 power minus 22. Now we should perform the addition operation. In the addition operation we should compare the exponents and take the smaller exponent data, okay, align to right direction up to the difference. So here difference is 2, so that here what we are taking, Y mantissa will be aligned to right direction. So plus 0.0101 into 2 to the power of minus 20. Now exponents are same, directly we can do the addition. So Z is equal to, right, what is that, 1.1 into 2 power minus 20, then 0.0101 into 2 power minus 20. So here answer is 1.1101 into 2 power minus 20, right. Now store this into the format. Here format given as single precision. Single precision format, sign is positive, dono positive numbers, positive sign 0. Then BE is equal to AE plus bias. So here AE value minus 20, bias value plus 127. So this become 107, right. 1017 equivalent binary code is 0110 1011, right. Next, this is the mantissa portion, 1101, remaining all are zeros. Okay, group 4 bits, take the value. This is 3, this is 5, and next E, then 8 0 0 0 0. Okay, so finally answer is 35E8 0000. So when you verify the options, right answer is 35E8. So D is matching. D is the right answer, dear students. I hope you understand the same analysis. You did right. Okay. Now last question which I received is, consider the following 8-bit sign integer x and y using sign magnitude format. Here sign magnitude format given. Sign magnitude format, first MSB bit is used for the sign, remaining bits are used for the value. So here 8-bit data. So first of all 8-bit sign magnitude range we want. 8-bit range of sign magnitude is minus 127 to plus 127. Okay, now here x value, what is x value? Just take this x value, x, MSB bit is 1, so that sign is negative, and remaining bits indicates the value. So x value is minus 52. Then here
MSB bit indicates the sign and remaining bits indicates the value. This is positive 76 plus 76. Correct. Now do the necessary action, compare with the result. X value minus 52, okay, minus plus 76. So this is equal to minus 128. This minus 128 is not in the range, so this is a overflow condition. Then minus 52, correct, plus 76. This is equal to plus 24. So plus 24 is in the range, so no overflow. So minus of minus 52, okay, plus 76. So this is equal to plus 128. Plus 128 is not in the range, therefore it is an overflow. Then this is minus of minus 52, correct, minus 76, correct. So this is equal to minus 24. Minus 24 is in the range, okay. So here when you see the options, which of the following operation results overflow? Here overflow present in A and C option. So correct answer is A and C. इन दोनों केसेस में overflow occurred and remaining cases में no overflow present. Okay students, so these are the questions which we received from the students, okay, based on the memory, right? So memory based questions from COA subject. I hope you understand, right? Thank you so much, dear students. Bye. Hello, very good afternoon all of you. How is everyone? कैसे लिखे सब लोग एग्जाम? पेपर कैसा था? इजी, मॉडरेट, टफ? जो लोग लाइव में हैं कमेंट करो. हाउ वाज द पेपर? इजी, मॉडरेट, टफ? कमेंट करो थोड़ा. Okay, so we have received couple of questions, okay, from programming a data structure and operating system. Based on the memory based questions we received, we will discuss the solutions, and if you are having any further questions, okay, with the proper data, so please send us, okay, in a Telegram group or in a WhatsApp group or even personally, okay, fine. Yeah, very good afternoon. Okay, fine. So just check the questions, whether you see the same thing. Okay, first question we see in the operating system. This question is based on the deadlocks. Have you seen the same question? In the operating system, there are 5 processes in a system. Maximum number of records. Okay, records a process can take. Records in the sense you take it as resource. Resource or records, anything. At a time, a process can take only one record or resource. Okay, use both the places, use the same thing. Okay, let us say records. Okay, right, and can free only a single resource. Okay, fine. How many records required to ensure deadlock free execution? So this is a general basic question. So here resource record means, don't confuse,
Record means you can just assume it as a resource only, okay. And this line is not having any significance, okay. Generally you confuse, at a time a process can take only a single record and can free a, okay, single resource. What is the meaning of that? Okay, एक के बाद एक, okay, acquire करेगा, release करेगा, that is the meaning of that. So this line is not having much significance. तो अब बताओ बस इतना ही है कि 5 प्रोसेस है, 5 प्रोसेस है, हर एक प्रोसेस को दो रिसोर्स चाहिए, okay, right. To complete the execution, every process require 2 resources. He is saying how many resources required to make sure that it should be deadlock free. Okay, now tell me what is the answer. ऐसे ही था, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्वेश्चन डेडलॉक्स का क्वेश्चन ऐसा ही था. Okay, somebody saying lengthy, somebody saying tough. Okay, easy to moderate, okay, but lengthy, okay, right, okay. So different answers are coming, right. So this question generally you can solve, we are having a direct formula is there, okay, you can solve with the formula. So 5 processes हैं, right, P1, P2, P3, okay, right, P3, P4 and P5. एक एक को दो रिसोर्स चाहिए, right, 1 1 1 1 like this. Additionally you have to give 1, okay. So डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं अपन ना, okay, right. एक प्रोसेस को तो पूरा रिसोर्स मिलना चाहिए, बाकी प्रोसेस को एक एक कम मिलना चाहिए. Otherwise you can use the formula also, right. So what is the formula? M equal to, okay, right, okay, n multiply with what? R minus 1 plus 1, okay. कितना रिसोर्स चाहिए? हर एक प्रोसेस को एक कम देना चाहिए, बट एडिशनली प्लस 1 करना चाहिए. यू नो द फार्मूला, यू कैन अप्लाई दिस ऑल्सो, राइट. यू आर हैविंग 5 प्रोसेसेस, 5 into, okay, right. So R minus 1, एक एक को 2 चाहिए, so that is the 2 minus 1, 2 minus 1 plus 1, okay. So this is the 5 plus 1, that is the 6. So answer is 6, right. You can use the formula, you can use the basic quotient only, right. So answer is 6. Yes, answer is 6. Okay, you are having 5 process, answer is 6, okay, right. Question same था क्या? Question was same, okay, everybody is giving answer right, 6 only, right. Question properly सही था, right. So if this is the same question, exactly same question, answer is 6, okay, right. So let's move on to the next question. This question is actually operating system plus COA, okay, you can say computer organization because cache is also included. Consider TLB, cache and memory management unit, MMU, okay, with the paging, which is never be true. This is the answer, okay. Can you just see the question? The question was same, question सही था, okay. If this is the question, okay, you can just check, okay. थोड़ा simple है, not much difficult, okay. TLB miss है, okay, page hit होगा, cache hit होगा, is saying, okay, various things, various probabilities, okay. I think this is a MSQ. This question is a multiple selective questions, MSQ according to my knowledge, okay, right. So just observe here, option D is asking can never be true. Never be true means he is asking what? False. Indirectly never be true means what? He is asking false. अब बताओ TLB hit हुआ, अब बताओ TLB hit हुआ, TLB hit हुआ तो पेज टेबल मिस होने का चांस है क्या? नहीं है, okay. TLB hit है तो directly you get the, okay, main frame number. TLB hit है तो directly you get the frame number and you go to main memory, right. So TLB hit है तो पेज टेबल मिस होने का कोई चांस नहीं है, okay, right. So this is absolutely false, okay. Remember this is false. TLB hit है तो पेज टेबल पे जाएंगे नहीं है, okay. मतलब मान लो पेज टेबल हिट ही है, ऑब्वियसली हिट है. So TLB हिट है, पेज टेबल मिस होने का कोई चांस नहीं है, okay. अगर TLB में है तो पेज टेबल में रहना ही पड़ेगा, okay, right. And next TLB मिस है, okay, right. देखो TLB मिस है, हाँ TLB मिस है तो where you will go to what? पेज टेबल, okay, right. So पेज टेबल में, okay, right, see this here, पेज टेबल में मिस है, okay. यहाँ पे देखो TLB मिस है, TLB मिस है तो कहाँ पे रहना चाहिए बताओ? TLB मिस है तो पेज टेबल में देखोगे आप, पेज टेबल में हिट भी हो सकता, मिस भी हो सकता, भाई पेज फॉल्ट है तो दैट्स अ डिफरेंट केस, ओके, राइट. अगर पेज फॉल्ट है तो TLB मिस हो गया, मतलब पेज टेबल मिस हो गया. अगर पेज फॉल्ट है तो पेज टेबल मिस है तो ये कैश हिट कैसे होगा? मतलब तुम बोल रहे हैं कि मेन मेमोरी में नहीं है मगर कैश में है, दैट इज नॉट पॉसिबल. कैश में होना बोले तो मेन मेमोरी में पक्का होना ही चाहिए,
आप बोल रहे हैं कि पेज टेबल मिस है तो इसका मतलब मेन मेमोरी में नहीं है, मेन मेमोरी नहीं है तो कैश हिट कैसे होगा, चांस ही नहीं है, सो दैट इज अ फॉल्स। दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर, राइट। अब बताओ नेक्स्ट ऑप्शन बी में जाओ, टीएलबी मिस हुआ, ओके फाइन, टीएलबी में मिस हुआ, पेज टेबल मिस हुआ, ओके राइट, मतलब टीएलबी में नहीं है, ओके पेज टेबल में रहना चाहिए, पेज टेबल में नहीं है मतलब पेज फॉल्ट हो गया, चलो ठीक है पेज फॉल्ट हो गया, टीएलबी में नहीं है, बाद में चेक कर रहे हैं पेज टेबल में भी नहीं है, तो इसका मतलब पेज फॉल्ट है। जब पेज फॉल्ट है तो ऑब्वियसली कैश में भी, मतलब कैश में हिट भी हो सकता है, मिस भी हो सकता है, कैश में भी नहीं है, मगर पेज टेबल मिस है तो डेफिनेटली कैश मिस ही होगा ना ऑब्वियसली, राइट। पेज टेबल मिस है मतलब मेन मेमोरी में नहीं है, मेन मेमोरी नहीं है तो कैश में रहना ही नहीं है, ऑब्वियसली रहना नहीं है, सो दिस इज पॉसिबल, दिस इज ट्रू, ओके फाइन। अब बताओ ये वाला टीएलबी मिस है, ओके टीएलबी में नहीं है, ओके पेज हिट है मतलब मेन मेमोरी में है, मेन मेमोरी में है तो कैश में हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये बोल रहा है कि ओके कैश हिट है, यस दिस इज ट्रू, बट रिमेंबर कैश अगर हिट है तो पेज टेबल पक्का हिट ही होना चाहिए, तो यहां पे इसलिए अपन फॉल्स किया, कैश हिट है तो ये बोल रहा है कि पेज टेबल मिस है, ये पॉसिबल नहीं है, राइट मगर पेज टेबल हिट है तो कैश हिट भी हो सकता, कैश मिस भी हो सकता, दैट इज फाइन, इज दिस क्लियर, राइट। So this is true, this is true, this is true, this is false, these two are false. So I think in the question is asking false, I think these two are the false. Is this clear for everyone? And this was same question asked, right? Okay, so this is the okay operating system, these two questions we are having, and next let's see some questions in the programming and data structures. This is one of the very good question, okay, right? If you observe this question, just observe here, consider the following program, integer bar, okay, he has given this, okay, these values are given, and okay, this function is given, this function is given, the smallest value of n for which foo of n is equal to 5, is the same question, एक बार क्वेश्चन देख लो, yeah student, you can prepare obviously, right? Initially you try with the last 15 years, okay, is this question was same based on the recursion, this question is based on the recursion, actually this question is not very tough, but the question is little lengthy, question is little lengthy, okay, right. So first of all I will reveal the answer, question is lengthy, not very tough question, not very tough question, but the lengthy, थोड़ा समझने के लिए अप्रोच करने के लिए टाइम तो लगेगा, राइट। सो दिस क्वेश्चन जनरली ऐसे, इफ यू आर एबल टू सॉल्व इन 2 to 3 minutes you can solve, otherwise you can skip, okay, right, but question is doable, question is doable, okay, not very very tough, okay, just observe, you can substitute n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4, n equal to 5, just observe the behavior of this function, bar function का, okay, behavior को समझना होगा, n equal to 1 सब्स्टिट्यूट करो, 2 सब्स्टिट्यूट करो बार में, बार फंक्शन में, राइट, n equal to 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा सब्स्टिट्यूट करो, सब्स्टिट्यूट करे तो बार फंक्शन का बिहेवियर समझ में आएगा, बार फंक्शन कर क्या रहे, what the bar function is doing, okay, this you will understand, okay, by substituting the values. So I am just writing here, okay, easily bar of n, ये function क्या कर रहा है, okay, log n base 2 कर रहा है, so indirectly that is taking the floor value of that, this is what is bar doing, this is what is the bar function doing, okay, right. You can just observe here n equal to 1 है तो return 0, otherwise return 1 plus bar of n by 2. So मैं क्या बोला, इसको क्या करना चाहिए, how to recognize bar function क्या कर रहा है, how you can recognize, by taking n equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, you just make a observation what the bar function is doing. Based on that observation of the values and results, you can understand bar function कर क्या रहा है, log n कर रहा है, log n base 2 कर रहा है, okay, right, this what is doing, ये क्लियर हो गया, राइट। आई एम रिवीलिंग द आंसर, पहले मैं आंसर बता रहा हूं, आंसर इज ओके 2 power 16, दिस इज द आंसर, पहले मैं आंसर बता दिया, आंसर इज व्हाट, 2 power 16, कैन एनीबॉडी सॉल्व दिस, हाँ फंक्शन कॉल करते करते पेज खत्म हो गया, राइट, मैं बोला थोड़ा थोड़ा ट्रिकी है, लेंदी क्वेश्चन है ये, राइट, लेंदी क्वेश्चन है, आंसर मैंने बता दिया 2 power 16, वो कैसे आएगा,
देखो फर्स्ट फू ऑफ n में क्या पास कर रहे हैं 2 पावर 16। देखो फर्स्ट टाइम आई एम कॉलिंग ओके 2 पावर 16 ओके n वैल्यू मैंने लिया, दिस इज द n वैल्यू ओके 2 पावर 16 होना चाहिए सो दैट दिस ओके फू ऑफ n वैल्यू क्या हो जाएगा 5 होगा। कैसे होगा, जैसे एक्सपैंड करना है राइट, n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0, अदरवाइज 1 प्लस फू ऑफ बार ऑफ n करोगे। हाँ देखो ये फंक्शन क्या करेगा, देखो ऐसा करेगा 1 प्लस ओके फू ऑफ बार ऑफ 2 पावर 16, ये क्लियर है। बस n वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 2 पावर 16 ओके n इक्वल टू 0 है राइट, रिटर्न 0, अदरवाइज 1 प्लस फू ऑफ बार ऑफ n किया। तो बताओ बार ऑफ ओके 2 पावर 16 व्हाट इट विल गिव यू, बार फंक्शन करता क्या है, log n बेस 2 कर रहे हैं, तो अगर log n बेस 2 करेंगे इसको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यू गेट 16 करेक्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, यू गेट 16, दिस वन इज क्लियर राइट। अब क्या हो जाएगा, नाउ इट विल बिकम 1 प्लस ओके फू ऑफ 16 होगा, दिस वन इज क्लियर। अब बताओ नेक्स्ट ये फू ऑफ 16 फिर से कॉल होगा राइट, फिर से कॉल होगा तो क्या होगा 1 प्लस ओके फू ऑफ बार ऑफ 16। अब बताओ बार ऑफ 16 मतलब ये सेम log n बेस 2 करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 4 आएगा ओके, इसका आंसर 4 आएगा राइट। सो नेक्स्ट ये होगा 1 प्लस ओके फू ऑफ 4 होगा राइट। सो ये फर्दर कॉल होगा राइट 1 प्लस ओके फू ऑफ ओके 1 मोर 1 प्लस आएगा ओके, ये फर्दर कॉल हो रहा है तो क्या करेगा 1 प्लस फू ऑफ बार ऑफ 4 ओके। अभी यहाँ पे ये log n बेस 2 करेंगे, इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा राइट। सो 1 प्लस 1 ओके, ये फू ऑफ क्या होगा 2 होगा, ये फू ऑफ 2 फर्दर कॉल हो गए तो क्या हो जाएगा बताओ 1 प्लस 3 1 हो गया। अब ये कॉल कर रहे हैं तो 1 प्लस फू ऑफ बार 2 होगा करेक्ट। अब बताओ ये बार 2 करेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 1 आएगा, तो देखो 1 प्लस 1 तो ये क्या होगा बताओ फू ऑफ 1 होगा, इसका फर्दर फंक्शन कॉल होगा तो 1 प्लस ओके फू ऑफ बार ऑफ 1 होगा करेक्ट। अब बताओ बार ऑफ 1 है तो क्या होगा, बार ऑफ 1 विल रिटर्न 0 राइट। सो नाउ दिस विल रिटर्न 0, और फू में 0 पास करेंगे तो दैट विल आल्सो रिटर्न व्हाट 0। तो कितने वंस आ रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो अगर आंसर आपको 5 लाना है तो n वैल्यू क्या होना चाहिए 2 पावर 16 ओके। ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके ओके राइट, व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, व्हाट दिस फंक्शन इज डूइंग, यू हैव टू मेक द ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ओके। ब्लाइंडली सॉल्व करने से नहीं होगा, ब्लाइंडली सॉल्व करने से नहीं होगा राइट। सो दिस इज टफ क्वेश्चन राइट, मतलब थोड़ा लेंदी टफ आप बोल सकते हैं, मतलब इजी तो नहीं है ओके। एग्जाम में ये क्लिक होना ओके उतना इजी नहीं है ओके, इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। सेम आया था राइट, 10 मिनट लगा था राइट ओके फाइन। अपराजिता ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था एमसीक्यू था, अपराजिता एमसीक्यू था, ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था राइट। ऑप्शंस थे क्या राइट, ऑप्शंस वाज अवेलेबल और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ओके 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 फाइन। कहां पे, यहाँ पे रिटर्न 1 कर रहा था, चेक करो एक बार, चेक करो एक बार ओके राइट। तो अकॉर्डिंग टू माय डेटा दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर क्वेश्चन में अगर कुछ चेंजेस है तो आप देखना पड़ेगा ओके अकॉर्डिंग टू दैट राइट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली ओके, चेक करो एक बार क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम, व्हाट इज आउटपुट प्रिंटेड, ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। ओके बट मेनी पीपल सेड वहां पे n इक्वल टू 0 है तो रिटर्न 0 ही था, फ्रेम फ्लिक्स ओके एक बार देख लेना राइट। दिस क्वेश्चन देखो इंटीजर ओके, सी दिस हियर i इक्वल टू 9 j इक्वल टू 10, f ऑफ ij कॉल हो रहा है, f ऑफ ij इधर आया, i लेस देन j ओके, सी दिस हियर i लेस देन j ट्रू है, i लेस देन j ट्रू है, सी दिस हियर i वैल्यू इज 9 ओके, j वैल्यू इज 10 ओके। अभी थोड़ा डाउट आ रहा है कि ब्रैकेट ओके यहां से यहां तक है ये राइट, देखो ये यहां से यहां तक है राइट, ये यहां से यहां तक है, एक बार देख लो। अब देखो ये प्रिंटफ है कहां पे, दैट इज इंपॉर्टेंट, वी हैव नॉट रिसीव्ड एग्जैक्ट डेटा,
एक बार देख लो क्वेश्चन में, देख लो ये प्रिंटफ कहां पे था, यहां पे था और या तो यहां पे था। देखो कुछ लोग बोल रहे हैं यहां पे था, कुछ लोग यहां पे था, ओके राइट। अगर यहां पे है, ओके राइट, तो यहां पे ये इंटीजर, ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा, करेक्ट, ये लोकल वेरिएबल होगा। अब बताओ अगर यहाँ पे प्रिंटफ है, ये व्हाइल लूप कब तक चलेगा, व्हाइल लूप चलेगा ओके जब तक ये फॉल्स नहीं होगा, करेक्ट है। जे वैल्यू के ऊपर तो डिपेंडेंट नहीं है, जे वैल्यू तो नहीं पूछ रहा है, प्रिंट आई पूछ रहा है, राइट। देखो आई लेस देन 10 बोल रहा है, जब व्हाइल लूप कब फॉल्स होगा, जब आई वैल्यू 10 हो गया। जब आई वैल्यू 10 हो गया तो बाहर आके सीधा प्रिंटफ करेंगे तो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। अगर यहां पे है तो इट विल प्रिंट 10। अगर यहां पे है, अगर यहां पे है समझो, अगर यहां पे है तो ये आई का तो स्कोप इसके अंदर ही है ना, राइट। ओके देन ही इज आस्किंग अबाउट दिस आई ओनली, राइट। अगर प्रिंटफ यहां पे होता तो डायरेक्ट आंसर 9 है, ओके कुछ करने का है नहीं, बिकॉज ये वाला आई का तो स्कोप क्या है, दिस स्कोप ऑफ दिस वन इज ओनली विद इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। सही सही आ रहा है, ये वाला आई का स्कोप जो है विद इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट। अगर यहां पे है ओके राइट इट इज 10, अगर यहां पे है तो बाहर आने के बाद मतलब पुराना आई को ही पूछ रहा है वो 9। सो चेक करो कहां पे था प्रिंटफ, वही मैं बोल रहा हूं, ओके फ्रेम फ्लिक्स, ओके वो आई कहां पे था उसके ऊपर डिपेंड करेगा। प्रिंटफ स्टेटमेंट कहां पे था, प्रिंटफ ये वाला ब्रैकेट के यहां पे था, यहां पे था, देख लो क्वेश्चन तो इजी है। दिस क्वेश्चन इज आई मीन perfectly easy, there is no chance, very easy question, ठीक है राइट। So if you see the next question, okay, this question is based on the linked list, and simple recursion, एक बार देख लो राइट। काउंट द नंबर ऑफ नोड्स इन द लिंक लिस्ट, ओके विच इज नॉट एम्प्टी, मतलब लिंक लिस्ट है ओके विच इज नॉट एम्प्टी है, ओके उसका काउंट करना है, नंबर ऑफ नोड्स काउंट करना है, बट द फंक्शन इज व्हाट, रिकर्शन, ओके राइट। सो दिस इज अ स्ट्रक्चर नोड, ओके ये तो नॉर्मल है स्ट्रक्चर है, राइट। सो फंक्शन ओके नोड स्टार हेड आपको पास किया। देखो इफ E1, यहाँ पे E1 का वैल्यू क्या होगा, E2 का वैल्यू देखना है, बस डायरेक्टली आप बता सकते हो। देखो काउंट करना है नंबर ऑफ नोड्स, E1 चाहिए, इफ E1 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1, रिटर्न 1 कर रहा है। देखो लिंक लिस्ट में रिटर्न 1 कर रहा है तो इसका मतलब मिनिमम 1 नोड होना चाहिए। मिनिमम 1 नोड होने का क्या होगा E1, देखो हेड इक्वल टू नल है तो इसका मतलब 0 नोड है। सुनो इधर, हेड इक्वल टू नल है तो रिटर्न 1 करते नहीं करते, तो क्लियरली आंसर रॉन्ग। अब देखो हेड इक्वल टू नल ऑप्शन बी में भी हेड इक्वल टू नल है तो रिटर्न 0 होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये भी गलत है। हाँ हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल है, हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल, दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स, अपन क्लियरली क्या क्लास में पढ़ते, हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल मींस ओके दैट इज क्लियरली हैविंग ओनली 1 नोड। सी दिस हियर, हेड ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू नल लिंक लिस्ट के अंदर, सो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो दिस इज नेक्स्ट, ओके राइट। सी दिस हियर, ओके डेटा, राइट। See this here, head is point, head of next equal null means it is having only 1 node, clear right। so only 1 node है तो obviously रिटर्न 1 करना पड़ेगा। अभी E2 में अदरवाइज क्या करोगे, ये वाला नोड को काउंट करना है और रिकर्सिवली you have to call the same function by passing head of next, so it means right answer is what, C, right answer is what, is this clear for everyone? This is also right, very easy question only। So this node question was for 2 marks, okay right, very good। अगर 2 marks का question है तो this like a very easy question, okay, simple recursion and based on the linked list, okay right। So hope you have done okay best from your side, okay remember we have so many other things, other exams in the okay continuation, you try to give all other exams because same preparation okay is sufficient to give all the other exams in the continuation, okay we'll make a separate video, right। so what are the other exams you can do okay after this, okay we'll discuss that, okay but remember never stop your preparation, one line statement I am saying, never stop your preparation, continue the same preparation, we are having so many other exams in the pipeline, IIIT Hyderabad, IIIT Delhi, okay BITS Pilani, okay right, okay next ISI Kolkata, JNU Delhi, all are having the best placements, okay right। so continue the same preparation, any PSU exam is coming, okay you can attempt all that, okay you can try all other exams, we'll make a separate video what are the other options available, okay with the same preparation okay you can give so many other exams in the continuation,
ओके टिल अप्रैल मे तक का, ठीक है ना, राइट, चलो ओके राइट, अदर टीचर विल कंटिन्यू, ओके विद द अदर सब्जेक्ट, ओके राइट, थैंक यू, ओके टेक रेस्ट, आप रेस्ट कर लो आराम से, राइट, विल मेक ए वीडियो, राइट, हाउ नेक्स्ट अदर एग्जाम्स यू आर हैविंग, व्हाट एग्जाम्स यू कैन प्रिपेयर, व्हाट एग्जाम्स यू कैन ओके अटेम्प्ट, ओके राइट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. Hello friends, let us quickly see the solutions of the digital electronics. In this question, it's P bar S, okay, it's P bar S, okay. Let us see the simple question please. He just gave a simple question on MC. This is, he's asking, is actually MSQ question. He's asking which of the following is correct, okay. Simple K-map based question, you can simply solve using K-map. या दूसरा मेथड क्या है, मिन टर्म्स निकाल के भी कर सकते हैं, ऑलरेडी वी नो द शॉर्टकट आल्सो हाउ टू फाइंड द मिन टर्म्स, ठीक है, मिन टर्म्स निकाल के भी कर सकते हैं, या सीधा के मैप से आल्सो यू कैन सिंपली सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके. एमसीक्यू नहीं है, इट्स एन एमएसक्यू क्वेश्चन, एक्चुअली इट्स एन एमएसक्यू क्वेश्चन, ओके. चलो ठीक है, लेट्स क्विकली सी दिस, ओके. सो दिस इज पी क्यू, दिस इज आर एस 0001 1110, दिस इज 0001 1110, ओके. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11 12 13 14 15, ठीक है. So how do you approach this question? Simple, write the min terms please. What are the min terms? Okay, the min terms are basically 1 1 2 3 4 5 7 10, next 12 13 14 12 13 14. सो एनी क्वाड्स आर पॉसिबल, पहले ये चेक कर लीजिए क्वाड पॉसिबल है क्या, क्वाड पॉसिबल है तो क्वाड चेक कर लीजिए प्लीज, यहाँ पे क्वाड पॉसिबल है, इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, ठीक है. इसका अगर एक्सप्रेशन निकालेंगे तो व्हाट इज द आंसर दैट यू आर गोइंग टू गेट. सो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो पी बार कॉमन है, ठीक है, दूसरा इन दोनों में क्या कॉमन है, ठीक है, इस क्वाड में. सो बेसिकली यहाँ तो इन दोनों में तो पी बार कॉमन है, इन दोनों में तो एस कॉमन है, सो दिस इज नथिंग बट पी बार एस, ठीक है. दूसरा यहाँ पे भी तो क्वाड बनेगा ना, यहाँ पे भी तो क्वाड पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी तो क्वाड पॉसिबिलिटी है, ओके. यहाँ पे क्वाड पॉसिबिलिटी है तो इन दोनों में क्या कॉमन है, एक तो क्यू कॉमन है, ठीक है, और इन दोनों में आपस में क्या कॉमन है, आर आर जीरो कॉमन, आर बार, सो क्यू आर बार, तो ये भी एक कॉमन हो गया. आप चेक कर सकते हैं चारों ऑप्शन में यही है, ओके, पी बार एस प्लस क्यू आर बार, पी बार एस प्लस क्यू आर बार, तो यहाँ तक तो ठीक हो गया, ओके. ये तो एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, ये दोनों एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, इन दोनों का तो सोल्यूशन आ गया, ठीक है. अब बचा है 9 3 1 बचे हैं इसके, इसमें ये सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स, इसमें तो क्वाड तो नहीं बन पाएगा, तो यहाँ पे पेयर्स बन सकते हैं, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ पेयर्स इज गोइंग टू हैपन, ओके. सो नाउ लेट्स सी यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है. एक ऐसे कर सकते हैं, एक पेयर ऐसा हो सकता है, ठीक है. अगर ऐसा पेयर करते हैं तो ऑब्वियसली पॉसिबिलिटी ये ऐसा कर सकते हैं, दिस इज वन पॉसिबिलिटी, ओके. दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर इन दोनों को ऐसा ग्रुप कर देंगे, ठीक है, ये दोनों ग्रुप कर सकते हैं, सो ये एक और पॉसिबिलिटी है, ओके. सो और क्या पॉसिबिलिटी है, ओके. सपोज फॉर एग्जांपल इन दोनों को पेयर करते हैं, ठीक है, तो ये आपस में ये भी ऐसे भी कर सकते हैं. सो लाइक दिस मल्टीपल पॉसिबिलिटीज आर कमिंग, सिंपल. तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सिंपल आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ से यू जस्ट मेक दैट ग्रुप द टर्म्स, राइट द टर्म्स एंड जस्ट चेक द ऑप्शंस, ठीक है. वो एक पॉसिबिलिटी है. दूसरा और भी बेस्ट मेथड क्या है, जो क्लास में पढ़ाया था, क्या क्लास में क्या पढ़ाया, सिंपल एक्सपैंड दिस एंड जस्ट गेट द मिन टर्म्स, प्रॉब्लम सॉल्व, ओके. तो इनका तो मिन टर्म्स पता चल गया. क्यू आर बार का मिन टर्म्स क्या क्या है, क्यू आर बार का मिन टर्म्स है 4 5 12 13, सो टिक कर लो 4 5 12 13, 4 5 12 13 टिक कर लो. क्यू आर बार का मिन टर्म्स सिंपल, मिन टर्म्स से और भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है. तो इसका मिन टर्म्स क्या है 1 3, नेक्स्ट 1 3 5 7, 1 3 5 7 इज बेसिकली, सो ये भी मिन टर्म्स 1 3, ओके 5 7, ठीक है. सो 1 3 5, तो ये मिन टर्म्स तो हो गया. तो अब बचा क्या है, नाउ लेट्स क्विकली सी
ठीक है। तो ये इन दोनों का तो मिन टर्म्स मैंने लिख दिया, अब इनका भी मिन टर्म्स एक्सपेंड कर लो, चेक कर लो, चलो ठीक है। अब चेक करते हैं। सो 0 0 0 डैश 0 और 1, तो यानी क्या क्या मिन टर्म्स होंगे? सो M0 M1 आएगा, इसमें अगर एक्सपेंड करेंगे तो M0 M1 आएगा, ये तो गलत है ऑब्वियसली, M0 M1 तो नहीं आ सकता, ठीक है, ये तो गलत है, ठीक है, इट्स रॉन्ग बेसिकली, अंडरस्टूड, रॉन्ग यहाँ पे क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है। सिंपल मिन टर्म्स लेके करेंगे तो और भी ईजी हो जाएगा, ठीक है। इसका भी एक्सपेंड करते, ये दोनों हो गया ना ऑलरेडी, ठीक है, ये मिन टर्म्स तो कवर हो चुका है, तो इसका भी देख लेते हैं, ठीक है। ये 0 0 1 0 0 1 पुट अ डैश 0 और 1, ओके। तो ये 2 and 3 तो 2 3 पॉसिबिलिटी है, अंडरस्टूड, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसका देख लीजिए, यहाँ पे मिसिंग वेरिएबल क्यू है, सो दिस इज नथिंग बट 1 1, नेक्स्ट 1 1 0 0 0 और 1, सो यहाँ पे देखिए 10 and 14 ऑप्शन करेक्ट है। ये तो ऑलरेडी दोनों हो चुके हैं, ये दोनों हो चुके हैं। अब चेक कर सकते हैं 2 3 10 14 2 3 10 14 10 and 14, तो ठीक है, तो दिस ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट इसका भी चेक कर लेते हैं, इसका भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज 1 1, नेक्स्ट आर इज मिसिंग, पुट अ डैश 0 और 1, ओके, 0 0, ठीक है, 1 1 0 0, ठीक है। सो बेसिकली 12 and 14 ये भी ठीक है। सो नेक्स्ट दिस इज 0 1, नेक्स्ट 0 और 1, नेक्स्ट दिस इज नथिंग बट 0 1 0, ओके, 0 1 0, सो या 2 होगा या 10 होगा, तो ये भी करेक्ट है, दिस ऑल्सो इज करेक्ट, ओके। सिंपल मिन टर्म्स निकाल के कर सकते थे, इजीएस्ट फास्टेस्ट वही होगा। इसको एक्सपेंड करके चेक कर लो, 1 0, नेक्स्ट पुट आर इज मिसिंग, पुट अ डैश 0 और 1, दिस इज 0 0, ओके। सो यहाँ पे 8 आ गया, 8 मिन टर्म तो होता नहीं है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन, ओके। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन इज बी एंड सी, सो बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, देखिए एक्सपेंड करके कर सकते हैं, इसमें सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स है, बेसिकली यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यू आर हैविंग एसपीआई, सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट्स है यहाँ पे, ओके। जब भी एसपीआई होता है तो इसमें से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन इजीएस्ट मेथड क्या है, मिन टर्म्स ऑलरेडी मेथड आप जानते हैं, ऑलरेडी क्लास में पढ़ा चुका हूं, दैट यू जस्ट एक्सपेंड द मिन टर्म्स इन दिस क्वेश्चंस, 100% करेक्ट आंसर आएगा और इसमें मिस्टेक होने के चांसेस भी नहीं है, ओके। जस्ट यू एक्सपेंड द मिन टर्म्स, यू विल गेट द आंसर। इसमें देखिए ये सेम एक्सप्रेशन 4 बार दिया है, तो 4 बार एक्सपेंड मत कीजिए, कॉमन सेंस ऑब्वियसली, अंडरस्टूड, 4 बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार करेंगे तो इसका पता चल जाएगा। तो बाकी बस मिन टर्म्स एक्सपेंड कर लीजिए, अभी जो मैच कर रहा है तो ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे 0 0 0 आ गया, 0 तो यहाँ पे है नहीं, खत्म, निकाल दो, ठीक है। ऑप्शन बी एंड सी है इसका, ये एमएसक्यू का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन। ये के मैप से भी कर सकते हैं, आई वुड रिकमेंड इजी मेथड, बिना टेंशन का आ जाएगा, सिंपल क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट, ओके, नाउ लेट्स सी दिस आल्सो, ये भी एमएसक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, डिजिटल लॉजिक का क्वेश्चन है। सो ही इज आस्किंग अबाउट एक्सऑर गेट। आपको याद होगा एक्सऑर गेट, एक्स एक्सऑर वाई क्या है भाई, बताओ यार। एक्स एक्सऑर वाई इज बेसिकली, ओके, एक्स बार वाई प्लस एक्स वाई बार, ठीक है। या दूसरा ऑप्शन क्या है, पीओएस फॉर्म में क्या है, एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई, याद होगा आपको, ठीक है। सो बेसिकली एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई, ये तो एक्सऑर गेट का लॉजिक है। अब यही चीज मैं क्या करूंगा, सीधा एक्सपेंड कर दूंगा, ठीक है। आई विल यूज द सेकंड फॉर्म टू सिंप्लीफाई दिस, ठीक है। आई विल टेक इन द फॉर्म ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई, खत्म, फिनिश कर देते हैं। इसको लेते हैं, एक्सऑर गेट है ना, इसलिए कि एक्स ये वाई है, ठीक है। सो एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई, सो पहले एक्स प्लस वाई कर लेते हैं, पी बार प्लस क्यू प्लस दिस इज पी बार क्यू इंटू, ठीक है, ये एक्स है ये वाई है, एक्स एंड वाई, ओके, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स बार प्लस वाई बार। इसका बार किया तो क्या होगा, पी बार प्लस क्यू का बार किया तो क्या होगा, पी क्यू बार होगा, पी क्यू बार, ओके, पी क्यू बार प्लस, ठीक है। इसका बार किया तो क्या होगा, एक्स बार प्लस वाई बार ना, ठीक है। वाई बार क्या होगा बताइए, सो इट विल बिकम, ओके, पी प्लस क्यू बार, इट विल बिकम पी प्लस क्यू बार, ओके। अब ये आप इसको देखिए, वेरी वेरी सिंपल, अंडरस्टूड, आई एम जस्ट एक्सपेंडिंग इन द फॉर्म ऑफ एक्स बार प्लस वाई बार इंटू एक्स प्लस वाई, सिंपल, ओके, सिंपल, अंडरस्टूड। अब बताइए इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों में तो क्यू कॉमन हो जाएगा, क्यू कॉमन ले लिया तो क्या होगा, सो पी बार प्लस क्यू, क्यू इंटू 1 प्लस पी बार, क्यू इंटू 1 प्लस पी बार, 1 प्लस पी बार तो 1 है, ठीक है, इंटू यहाँ पे P प्लस, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, P कॉमन ले सकते हैं, P इंटू 1 प्लस क्यू बार, ओके, प्लस दिस इज क्यू बार, अंडरस्टूड, क्यू बार। तो यहाँ बेसिकली इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई, ये तो 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, आंसर विल बी P बार प्लस क्यू इंटू P प्लस क्यू बार, ओके। ये तो एक्सनॉर गेट है ना, ये तो एक्सनॉर गेट है, दिस लॉजिक इज बेसिकली एक्स बार प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई बार इज बेसिकली पीओएस फॉर्म में, ये एक्सनॉर गेट है, इट्स अ सिंपल एक्सनॉर गेट, ओके, सिंपल। अब शॉर्टकट आपको याद होगा, बेसिकली वी हैव डन दिस इन द क्लास आल्सो, ठीक है, कई बार हमने कहा ये तो एक्सनॉर गेट है, ये तो एक्सनॉर गेट है, ठीक है। तो ये भी एक्सनॉर गेट है ना, ठीक है। सो पी बार सी एक इन्वर्टर है, आपको याद होगा क्लास में हमने पढ़ाया, ठीक है। अगर ये एक इन्वर्टर होता है, एक इन्वर्टर अगर होता है तो ये भी एक्सनॉर गेट है, एक्सनॉर गेट, नंबर ऑफ इन्वर्टर्स देख के बता सकते हैं। सो ये एक्सॉर गेट है,
ठीक है, ये तो एक्सॉर गेट है, नंबर ऑफ इन्वर्टर्स काउंट कर लीजिए, अंडरस्टूड, नंबर ऑफ इन्वर्टर्स काउंट कर लीजिए। सो ऑप्शन बेसिकली ओके, ऑप्शन बी है और डी है, दो ऑप्शन है, सिंपल क्वेश्चन है, एमएसक्यू के क्वेश्चन, अंडरस्टूड, एमएसक्यू क्वेश्चन। नेक्स्ट, नाउ सैचुरेटिंग अप डाउन काउंटर क्लास में कराया, ये एक्चुअल 2017 का क्वेश्चन है, दोबारा पूछा, सैचुरेटिंग अप काउंटर दिया था 2017 में, अब इस बार क्या क्या पूछ रहा है, सैचुरेटिंग अप डाउन काउंटर बोल रहा है, ठीक है, दैट्स ओके। क्या फर्क पड़ता है, उसने ट्रूथ टेबल दिया, इसमें एक एक्स्ट्रा इनपुट है कॉल्ड पी, एक एक्स्ट्रा इनपुट दिया पी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें ही गिव द प्रेजेंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट, ही इज आस्किंग द डी वैल्यू, ठीक है, ही इज आस्किंग D1 D0। देखिए डी फ्लिप फ्लॉप का पूछा है Q प्लस इक्वल टू डी, ओके, Q1 प्लस इज इक्वल टू D1, Q0 प्लस इज इक्वल टू D0, फिनिश, ठीक है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं, Q प्लस इक्वल टू डी, फॉर डी फ्लिप फ्लॉप से इंप्लीमेंट कर रहे हो, Q प्लस इक्वल टू डी है, तो क्या है, सिंपल जस्ट ड्रॉ द के मैप, दैट्स इट, ठीक है, के मैप लेके सॉल्व करो, खत्म, सिंपल के मैप क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा लॉजिक है भी नहीं, यू डोंट हैव टू वरी, अंडरस्टूड, डोंट हैव टू वरी, सिंपल काउंटर दिया है, सो इज कॉलिंग अब सी सैचुरेटिंग अप काउंट, सैचुरेटिंग का मतलब क्या है, 0 0 के बाद देखिए 0 1 जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए 0 के बाद 1, ओके, 1 के बाद कहाँ जा रहा है, 2 पे जा रहा है, ठीक है, 1 के बाद 2 पे, 2 के बाद कहाँ जा रहा है, 3 पे जा रहा है, ठीक है, 3 के बाद कहाँ जा रहा है, 3 पे सैचुरेट हो जाएगा, ये क्लास में हम कर चुके हैं, 2017 कंप्यूटर साइंस गेट क्वेश्चन वही रिपीट किया, 3 के बाद 3 में ही रहेगा, 3 के बाद 3 में ही रहेगा, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटिंग अप काउंटर, ये सब कब होगा, P इक्वल टू 0 पे होगा, ओके। सैचुरेटिंग डाउन काउंटर का मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए 1 1 के बाद क्या होगा, 1 1 के बाद 1 0 होगा, रिवर्स, सैचुरेटिंग डाउन काउंटर मतलब 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद क्या होगा, 2 के बाद 0 1 होगा, 2 के बाद 0 1 होगा, ओके, सो 3 के बाद 2 होगा, 2 के बाद 1 होगा, अंडरस्टूड, 2 के बाद 1 होगा, 2 के बाद 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा, 1 के बाद 0 होगा, 1 के बाद 0 होगा, 0 के बाद क्या होगा, वापस 0 में ही रहेगा, अंडरस्टूड, 0 के बाद 0 में ही रहेगा, सिंपल, इसको बोलते हैं सैचुरेटिंग डाउन काउंटर, यानी 3 से शुरू हुआ, 3 2 1 0, वापस 3 नहीं जाएगा, वहीं पे रह जाएगा, इसीलिए सैचुरेटिंग बोल रहे हैं, दैट्स ओके, ये क्लास में हम कर चुके हैं, बस के मैप लेके सॉल्व करना है, जस्ट यूज द के मैप एंड सॉल्व इट, राइट द मिन टर्म्स एंड सॉल्व इट, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, P Q1 Q0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1 0 1 2 3 4 5 6 7, okay, right, this is P Q1 Q0, okay, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 और 1, okay, 0 1 2 3 4 5 6 7, okay, right, that's it, let's now see the min terms please, इसका क्या क्या min terms है देखते हैं, come on let's see, तो D1 का क्या क्या min terms है भाई बताओ यार, एक तो 1 है, next 2 1 2 3, okay, 1 2 3, you can write the min terms, this is M0 M1 M2, okay, M3, okay, this is 4, this is 5, this is 6, this is 7, okay, so simply 1 2 3 and this is nothing but 7, 1 2 3 and 7, 1 2 3 and 7, okay, so we can group like this, bas K map based simple question, okay, simple question based on the K map, understood, K map, so इसमें क्या कॉमन है, Q1 Q0, okay, Q1 Q0 प्लस, ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, P बार इंटू, ओके, इस इन दोनों में क्या कॉमन है बताइए, ऐसे ट्रैवल किया तो इन दोनों में क्या कॉमन है, P बार इंटू Q0, P बार इंटू Q0, ओके, प्लस दिस इज P बार इंटू, इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों सेल्स में Q1, P बार इंटू Q1, फिनिश, ये हो गया D1 का एक्सप्रेशन, ओके। अब D0 का भी देख लेते क्या क्या है, मिन टर्म M0 है, 0 है, नेक्स्ट 2 है, नेक्स्ट 3 0 2 3 6 0 2 3 6 0 2 3 6, okay, we can group these two, we can group these two, we can group these two, same model, okay, ये majority function type gate है, just like majority gate, so D0 equal to, okay, D0 equal to Q1 into Q0 bar plus, okay, यहाँ पे देखिए P bar into, okay, P bar into क्या क्या कॉमन है, यहाँ पे तो सेम टर्म आएगा, P bar into Q1, P bar into Q1, okay, plus this is P bar into, ओके, इन दोनों में आपस में क्या कॉमन है, आपस में क्या कॉमन है, Q0 बार कॉमन, Q0 बार कॉमन, हाईली सिंपल क्वेश्चन, अंडरस्टूड, सिंपल क्वेश्चन ही गिव फॉर D1 D0, अंडरस्टूड, D1 D0 बहुत ही इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है, वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, अंडरस्टूड, वेरी वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें लॉजिक भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड सैचुरेटिंग अप काउंटर, ये 2017 में दिया एक्चुअली, यूजिंग T फ्लिप फ्लॉप्स, कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके दिया, दैट्स ओके, दिस इज नथिंग बट द सैचुरेटिंग अप काउंटर, ओके, इट्स कॉल्ड द सैचुरेटिंग अप काउंटर, okay, and this fellow is called the saturating down counter, तो उसने क्या किया, he tried to create a system where you are having up and down counters, okay, with an extra input called P, that's it, very very simple and straightforward question, these are the answer, जितना तक आप अब तक questions मिले हैं, so these are the answers for this question, okay, thank you.
आवाज बढ़ा दे बाहर को माइक अनम्यूट कर ले The antonym of the word protagonist is, this question is from vocabulary from English part based on antonym, opposite word. So the given word is protagonist. Protagonist is the lead role. In simple words, it is a hero, main person, torchbearer is protagonist. We require opposite of it. Arsonist is a pyromaniac, somebody who sets fire and destroys things, okay, deliberately. Now anarchist is somebody who does not believe in democracy. Anarchist is a rebel. Anarchy is a lawlessness. That's wrong. Now agnostic is a person who is neither a theist nor an atheist. Theist is a person who believes in the existence of the Almighty. Atheist is Gnostic, somebody who does not believe in the existence of God. Now this agnostic is neither a theist nor an atheist. He is a person who is doubtful about the existence of God, somebody who is skeptical, somebody who thinks that it is almost impossible to know whether God really exists. Such a person. What is left is the answer. Antagonist is just the opposite of protagonist. Protagonist is the lead role, torchbearer. Simple words, he is a hero, and antagonist is a villain. Bahubali, who is the hero? Prabhas, he is protagonist. Who is the villain? Rana Daggubati, he is the antagonist, right? Ant is the root here, which means opposite. This is the only question that's available. Hope you definitely answered it correctly. Wait for the next subject, my dear friends.
Hello dear students, I am going to give the solutions of engineering mathematics and discrete mathematics. Yeah, just see this here. This is one question we have seen from the engineering mathematics here. F of x is given as mod x by 2 minus less than x, and this one. But generally I always used to say that whenever the mod is given, you have to remove the mod and understand the function, and based on that you can discuss about the minima, maxima, continuity, differentiability, everything here. So for that what we do is, first of all we need to remove the mod by using the definition of the mod x. So then we write it as f of x is equal to here. Yeah, I write this as mod x is piecewise at 0. So we write this for x less than 0 and x greater than or equal to 0. For x less than 0, this is going to be minus x, right? So minus x by 2 minus x into x minus of minus x by 2. So this one you will be getting as 3 by 2x, and this is 3 by 2x. So it is minus 9 by 4 x square here. Minus 9 by 4 x square, you can see, right? And then if you write for x mod x as x here, x by 2 minus x is minus x by 2, and this is x by 2, so it is minus x square by 4, minus x square by 4 you are having here, right? See, this for x less than 0 it's a parabolic curve, and for greater than 0 also parabolic curve. So you know that x square quotient is negative, the function will have maxima, right? Function will have maxima, right? And this is the curve for minus x square by 4 or minus 9 by 4x. कभी भी x square quotient का negative, x square का quotient negative है तो इस तरह parabola आता है. This is which is open towards down. Okay, so therefore it will have the maxima here. So therefore one of the option is f has a local maxima. Let me use another curl here. So f has a local maxima here, but local minima है ही नहीं यहाँ पर. कहीं भी x square की कोशेंट प्लस ही नहीं है, और एवरीवेयर बोथ कर्व्स आर इन बोथ द डोमेन्स इट इज ऑफ the inverted parabola, so therefore it does not have the minimum, it has the maximum. Then f dash x is continuous at x equal to 0 or not. See dear students, for that I think we have done similar kind of question in the class as well. So if you see this differentiation, and it's going to be minus 18x by 4, minus 18x by 4, इसका differentiation ये होता है minus 18x by 4 and minus x by 2 here. So this is for x less than 0 and this is for x greater than or equal to 0 here. Got it? Right बेटा, ये f dash of x है. क्या बोलता है? ये f dash of x है. So now अगर आप ये देखते हैं तो ये फंक्शन सीधा सीधा it is very clearly continuous दिखता है बेटा. So ये इसका कर्व ड्रॉ करें तो भी समझ में आए. This is a continuous curve and this is also continuous curve, and at x equal to 0 the left limit and right limit will be this. So therefore I can say that f dash x is continuous here, and then the f dash is not differentiable at x equal to. So what is f double dash of x? If you see f double dash of x, see it is minus 18 by 4 and this is minus 1 by 2 at x less than 0 and x greater than or equal to 0. At x equal to 0, f double dash x is not continuous. So we can say f double dash of x is not continuous at x is equal to 0. Not continuous at x equal to 0 means it is not defined at x equal to 0. So therefore f double dash of x does not exist. So that means you can say here f dash is not differentiable at x equal to 0. So therefore, so this is also true here, if you can see. Now coming to the next question here, ये बहुत easy questions है बेटा. जिस तरह हम एक लेवल में पढ़ते हैं तो उसके बाद अगर ये इस तरह क्वेश्चन आता है तो we can do it just by looking at the question, right? Very simply. So this one you can see, for n greater than 1 the maximum multiplicity of any eigenvalue. So maximum multiplicity of any eigenvalue means algebraic multiplicity of lambda. So what is this one is number of times the repetition of lambda. Repetition of lambda here, number of times the repetition of lambda here. Okay, तो अगर ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ किसी भी लैम्डा का क्या होगा, क्या बेटा, अगर वो n by n मैट्रिक्स है तो क्या हो सकता है. सो एक लैम्डा, सो जितना ऑर्डर है उतनी बार रिपीट कर सकते हैं. सो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ एनी लैम्डा मीन्स हाउ मेनी टाइम्स दैट मैक्सिमम टाइम्स दैट लैम्डा कैन रिपीट in terms of the
इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर्स और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा हो और am of lambda हो, तो मैक्सिमम विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, मैक्सिमम विल बी द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. सो देयरफॉर अगर रिपीटेशन करना है तो मैक्सिमम कितनी बार कर सकते हैं? सो 3 बार कर सकते, मतलब n बार कर सकते हैं. सो देयरफॉर आंसर इज डायरेक्टली सी हियर. तो यहाँ एक क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल हियर बिकॉज सी ही हैज गिवन दिस फंक्शन एंड सेइंग दैट इट इज कंटिन्यूअस. इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0. सो अगर कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इज f of x is equal to f of 0. What is this limit? And this one here it is x tends to 0. f of x क्या है कि c1 e power x minus c2 log of 1 by x ये होगा. That is equal to 3 बेटा, right? अब अगर आप x tends to 0 इसमें लेते हैं तो ये क्या होगा बेटा, ये x tends to 0 के लिए क्या होगा, ये log infinity हो जाएगा, तो ये infinity बन जाएगा. तो बट अगर ये infinity है बट it should be finite ना. Since the limit is finite, because it is continuous, limit is finite, limit finite होना है, so definitely, so c2 must be is equal to 0. This implies that c2 must be 0. अगर c2 0 हो गया तो इसका आंसर हो गया limit value, from this limit value is c1 is equal to 3 होगा. So therefore c1 plus c2 is equal to 3, right? So therefore the answer is c1 plus c2 is equal to 3 is the answer for this question, right? The next question, if you see, it's a probability question, dear students. You can see an unbiased 6-phased dice whose phases are marked with 1 to the, just is saying that it's a very fair dice, we having 6 phases, okay, and rolled how many times? 2 times. I think we can see this experiment is very frequently comes and which is very regular question. And the probability that number appear in the second roll or second throw is an integer multiple of the number appearing in the first throw, number in the first throw here, okay. तो अभी देखिए बेटा अगर क्या हो सकता है अगर फर्स्ट थ्रो integer multiple of the number appearing in the first throw. So अगर मैं बोलता हूँ सेकेंड थ्रो, अगर सेकेंड थ्रो जो है सो अगर ये 6 है तो फर्स्ट थ्रो क्या हो सकता है, फर्स्ट थ्रो क्या हो सकता है बेटा, सो फर्स्ट थ्रो हो सकता है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 6, सो इट इज 6. देन अगर ये 5 है तो ये 5 होना चाहिए, ठीक है. अगर ये 4 है तो इट्स अ मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा. अगर ये 3 है तो मल्टीपल ऑफ 3 क्या हो सकता है कि यहाँ 3, 6 हो सकते हैं, बिकॉज सेकेंड रोल इज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ द फर्स्ट वन. सो ओके, लेट मी राइट इन दिस वे हियर. First throw and second throw, I'll write it. So first throw if you take it and second throw if you take it, right? So first throw, second throw if you take it. If the first throw is giving you 1, so then the second throw can be 1, 2, 3, 4, 5, 6, any one of this one. So this can be done in how many ways? 6 ways, okay? 6 ways. You can say this is 6 ways, okay? You can say 6 ways it can happen, right? Suppose if it is 2, then 2, 4, 6, it can happen in 3 ways. Then 3 के लिए तो 3, 6, it can happen in 2 ways. 4, 5, 6, so 4 के लिए 4, 5 के लिए 5 and 6 के लिए 6. So this is done in 3. So totally how many here it is? 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8 plus this. How many here? 14 here. So therefore the probability of this event is here, ये 14 out of 36 है क्योंकि 14 favorable है out of 36. So this one is 7 by 18 you are getting. So the answer is option C. Option C is the right answer. Now this question beta. So thoda generally if you know what is null space and all the concepts and everything, so then you can give the answer for this. See, it is a non-zero solution or not, because he said that it belongs to the null space. It belongs to the null space means it is a non-zero solution. बट आपको पता है नॉन जीरो सोल्यूशन कब आएगा बेटा, नॉन जीरो सोल्यूशन मतलब दे आर infinitely many, okay. So therefore there are at least 2 non-zero vectors in the null space of A. Yes, it is true, right? Rank 1 होने का जरूरी नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, right? And mod A is equal to 1,
तो डिटर्मिनेंट अगर जीरो है तो नल स्पेस हाई होगा ही नहीं है, क्योंकि इन्फाइनाइटली सॉल्यूशन के लिए तो डिटर्मिनेंट मस्ट बी जीरो होगा. सो दिस इज द राइट आंसर and this is the wrong answer. So option A and D is the right answer for this. So my dear students, so these are the questions we have got from the memory based, okay, and baki questions are not so that clear. So the remaining questions whichever I get it, so I will be providing through the PDF. So thank you beta. So I hope all the CSE students have given the right answer. I mean given their examination a bit good way. So I hope everybody do the best and wish you all the best and God bless you. Right, thank you. And with this, the session is over for the computer science engineering solutions. Right.